Class 9, Chapter 5, Review Exercise. Now let's move forward. Question number 1. Encircle the correct answer. Number 1. Which statement about the particles of a solid is not correct? They move at great speeds. B. They are arranged in regular pattern. C. There is a very little space between the particles, and these the forces of attraction between the particles are strong. हमें इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट about the particles of solid गलत है. So the correct option is option A. That is, they move at great speed, because there is only vibratory motion between the particles of solid. Number 2. The boiling point of some elements are given below. Argon minus 186 degrees centigrade, and in Kelvin it is 87 Kelvin. Nitrogen minus 196 degrees centigrade and 77 Kelvin. C. Oxygen minus 183 degrees centigrade, 90 Kelvin. D. Xenon minus 108 degrees centigrade, 165 Kelvin. A mixture of above gases at minus 210 degrees centigrade was heated by 20 degrees centigrade. Which of the elements will still be in a liquid state? जब हम इन जो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया हुआ है हमने उसे हीट किया है -210 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो लिक्विड में है. ए ऑक्सीजन ओनली, बी आर्गन ऑक्सीजन एंड xenon, C. Argon, nitrogen and xenon. D. Only xenon. E. Oxygen and xenon. So the correct option is option B. Argon, oxygen and xenon. Because temperature range in Kelvin -210 degrees centigrade plus 20 degrees centigrade is equal to -190 degrees centigrade, and when we will convert degree centigrade into Kelvin we will add 273 and it will become 83 Kelvin. Elements having boiling point greater than 83 Kelvin will be in liquid state. जिनका boiling point जो है वो 83 Kelvin से ज़्यादा होगा वो liquid state में होंगे. तो इसमें कौन से elements है? Argon, oxygen and xenon. Number 3. The following table shows the melting and boiling point of some substances. Which substance is solid at room temperature? A. -186 degrees centigrade melting point और boiling point है -183. B. -6 120. C है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड. D है 36 और boiling point है 130 डिग्री सेंटीग्रेड. Correct option D, because room temperature is equal to 25 degrees centigrade. The substance having melting point greater than 25 degrees centigrade will be solid at room temperature. Number 4. In which of the following processes speed of particles decreases? A. Melting, B. Sublimation, C. Evaporation, D. Boiling or E. Condensation. So the correct option is option E. Condensation. क्योंकि इसके अंदर जो है वो पार्टिकल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाती है. Now let's move forward.
Number 5. Consider the following table. X, Y और X by Y की हमें वैल्यूज दी हुई हैं 0.0037, 0.0037, 0.0037, 0.0037। अब हमसे पूछा गया कि इसमें से जो है कौन सा रिलेशन यहाँ पे Which of the following relationship does the table represent? Option A, x directly proportional to y, B, x is equal to y, C, x inversely proportional to y, and D, x is equal to 1 by y. So the correct option is option A, because as x directly proportional to y, then x is equal to y. Constant जब हम proportionality का साइन लगाएंगे तो हटाएंगे तो constant आएगा, तो x is equal to y into constant, so x by y is equal to constant. तो ऑप्शन ए जो है वो होल्ड करेगा. नाउ नंबर 6, a liquid boil when its vapor pressure becomes equal to a 760 centimeter of Hg, B 1 pascal, C 101.325 kilopascal, and D 0.1 atm. So the correct option is option C, because 1 atm is equal to 101.325 kilopascal, and that is equal to 760 millimeter of Hg. Number 7. Acetone has a characteristic fragrant odor and is used to make fingernail polish. It melts at minus 94 degrees centigrade and boils at 56 degrees centigrade. What is the physical state of acetone as at 25 degrees centigrade and 180 m? Option A, gas. Option B, liquid. Option C, solid. And D, cannot be predicted. So the correct option is option B, because 25 जो है वो 90 -94 से बड़ा है और 56 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा है. तो 56 में हमें बताया गया है कि वो जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, और जब -94 होगा तो वो क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ आएगा. तो हमें टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड which is in between -94 or 56 degrees centigrade, so it will be in liquid state at 25 degrees centigrade. Number 8. Water normally boils at 100 degrees centigrade, but it is possible for water to boil at room temperature. What variable would you have to get to do this? Increase external pressure, B, decrease external pressure, C, decrease temperature, or D, none of these. So the correct option is option B, because when we decrease external pressure, the boiling point of water will also decreases. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है. जब हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ बढ़ेगी, जब हम एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगी. A liquid boils when its vapor pressure becomes equal to external pressure, so decrease in external pressure will cause a decrease in boiling point. Number 9. Bromine has melting point of -7 degrees centigrade and boiling point of 59 degrees centigrade. What is the physical state of bromine at 100 degrees centigrade? A, gas, B, liquid, C, solid, or D, cannot be predicted. Correct option is option A, that is gas, because at 59 degrees centigrade bromine will start converting from liquid state into gaseous state, and at 1000 degrees centigrade it will be completely converted to gas. हमें ऊपर स्टेटमेंट में ही बताया गया कि 59 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रोमीन का. तो जब हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे तो तब तक वो गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा. Number 10. Which is not property of crystalline solid? A, have a defined shape. B,
have orderly arrangement of particles, C have repeating three-dimensional arrangement of particles, or D are generally soft. So the correct option is option D. जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. उनकी हार्डनेस की वजह क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और जिसकी वजह से जो है वो उनकी डिफाइंड शेप भी होती है और एक स्पेसिफिक जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का. Explain why volume of gas decreases on increasing pressure on it at constant temperature. हमने बताना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने से क्यों कम हो जाता है. According to Boyle's law, volume of gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. Boyle's law क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. हाई प्रेशर ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस. जैसे हम प्रेशर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज कर जाता है. नंबर 2, how does temperature affect the vapor pressure of a liquid? टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है वो हमने बताना है. An increase in temperature will increase kinetic energy of molecules, and as a result of which the vapor pressure of a liquid increases. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी इंक्रीज हो जाता है. नंबर 3, water boils at 120 degree centigrade in a pressure cooker. Why? Pressure cooker is a closed container in which on heating boiling point of water increases, which help to increase external pressure. A liquid can be made to boil at any temperature by changing the external pressure. So water boils at 120 degrees centigrade in a pressure cooker because inside the pressure cooker external pressure increases. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? प्रेशर कुकर जो है वो क्लोज कंटेनर है जिसकी वजह जिधर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाता है और एज अ रिजल्ट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है. और जैसा कि आपने पढ़ा है कि लिक्विड जो है वो एट एनी टेम्परेचर बॉयल हो जाता है बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर. सो वाटर बॉयल हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड में इन अ प्रेशर कुकर, क्योंकि जो इनसाइड ऑफ प्रेशर कुकर है उधर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी इंक्रीज कर जाता है. नंबर 4, इज evaporation a cooling process? Yes, evaporation is a cooling process because when high energy molecules leave the liquid and low energy molecules are left behind, the temperature of liquid falls and heat moves from surrounding to liquid result, as a result of which temperature of surrounding also decreases. जब इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीव कर जाते हैं लिक्विड से जब हम उनका थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, और पीछे जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल बच जाते हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वो कम हो जाता है और हीट जो है वो सराउंडिंग से आती है टुवर्ड्स अ सिस्टम, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी डिक्रीज हो जाता है. नंबर 5, कैन यू मेक वाटर बॉइल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या हम वाटर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर सकते हैं? यस, अ लिक्विड कैन बी बॉइल at any temperature by changing external pressure. Lower the external pressure, lower will be the boiling point. Water boil at 100 degrees centigrade with
with 532 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। ये जैसे हमने नंबर 3 में बात डिस्कस की थी प्रेशर कुकर वाले केस में कि जो वाटर जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बॉईल करवाया जा सकता है बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को लो करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो, और जब हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। Number 6. Express the pressure 400 millimeter of Hg in kilopascal. As we know that 760 millimeter of Hg is equal to 101.325 kilopascal. 1 millimeter of Hg हो जाएगा 101.325 kilopascal divided by 760, and 400 millimeter of Hg is equal to 101.325 kilopascal divided by 760 multiplied by 400, that is equal to 53.33 kilopascal. Now question number 3. Explain the effect on the volume of a gas by a change in the following. Number A है pressure. Boyle's law states that the volume of a fixed amount of a gas at a constant temperature is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature. ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ कि जब वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली V is inversely proportional to P, V is equal to K by P, और जब हम P को V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। इधर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। It means that for gas at constant temperature the product of pressure and volume is constant, providing the temperature remains constant. जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट आएगा। नंबर बी है टेम्परेचर। Charles' law states that the volume of a fixed amount of gas at a constant pressure is directly proportional to the volume of the to the temperature. V is directly proportional to T, V is equal to KT, और जब हम V by T की जो रेशियो देंगे तो वो क्या आनी चाहिए, K के इक्वल, मतलब कांस्टेंट आनी चाहिए। K is proportionality constant. The volume of the gas increases as the temperature increases. As temperature increases, the molecules of the gas have more kinetic energy. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनके दरमियान जो फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कम हो जाते हैं और वो एक दूसरे से फार अपार्ट जाना शुरू हो जाते हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर जाता है। They strike the surface of the container with more force. If the container can expand, then the volume increases until the pressure returns to its original value. जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, सरफेस ऑफ द कंटेनर के साथ जाकर स्ट्राइक होना शुरू हो जाते हैं और उनकी फोर्स भी बढ़ जाती है, और अगर कंटेनर एक्सपेंड हो जाए तो वॉल्यूम जो है वो उनका इंक्रीज हो जाता है जब तक प्रेशर जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आता। Now question number 4. Explain the following properties of gases. Number A. Diffusion. Diffusion is the process in which gaseous atoms and molecules are transferred from regions of relatively high concentration to regions of relatively low concentration. डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन की से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इफ्यूजन
Effusion is a similar process in which gaseous species pass from a container to a vacuum or to a region of low pressure through very small orifices orifices को हम क्या कहते हैं holes. Effusion क्या है जी? Escape of gas through a very small holes from a container to a region to a vacuum or to a region of low pressure. The rates of effusion of gases are inversely proportional to the square roots of their atomic or molecular masses. ये के Graham's law की ये statement है. The rates of effusion of gases are inversely proportional to the square root of their atomic or molecular masses. Number 5. Explain the terms evaporation. Evaporation, the process by which an element or compound transitions from its liquid state to its gaseous state below the temperature at which it boils. In particular, the process by which liquid water enters the atmosphere as water vapor. The rate of evaporation depends on temperature, surface area. जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट की तरफ मूव करता है एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर और सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है. बी. वेपर प्रेशर. The pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with its liquid is called vapor pressure. जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स ऑफ अ लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सी. Boiling point. Temperature at which the pressure exerted by the surrounding upon a liquid, that its external pressure, is equalized by the pressure exerted by the vapors of a liquid. Liquid pressure is called boiling point. Under this condition, addition of heat results in the transformation of the liquid into its vapor without raising the temperature. Boiling is a physical change and molecules are not chemically altered during the process. The boiling point of a liquid depends on temperature, atmospheric pressure, vapor pressure of a liquid. जब temperature at which the pressure exerted by the surrounding upon a liquid, that is external pressure, जब external pressure जो है वो equal हो जाता है जो vapor pressure है, तो उस point को हम क्या कहते हैं? boiling point. इसमें क्या होता है कि जो substance liquid form में होता है वो gaseous state में जाना शुरू हो जाता है. Boiling is a physical change and molecules are not chemically altered during the process. Boiling point. The greater the pressure, the more energy required for liquids to boil and the higher the boiling point. जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लिक्विड को कि वो बॉयल हो सके, जिसकी वजह से जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. Higher atmospheric pressure, more energy required to boil, hence higher boiling point. In an open system, this can be visualized as air molecules colliding with the surface of the liquid and creating pressure. This pressure is transmitted throughout the liquid and makes it more difficult for bubbles to form and for boiling to take place.
If the pressure is reduced, the liquid requires less energy to change to a gaseous phase and boiling occurs at a lower temperature. जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो लिक्विड को लेस एनर्जी चाहिए होगी कि वो गैसियस चेंज के अंदर कन्वर्ट हो सके, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी एट लोअर टेम्परेचर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 7. Differentiate between amorphous and crystalline solids. Amorphous solid और crystalline solid के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है. Amorphous solid. Amorphous mean shapeless. It has a regular arrangement of solid particles. The intermolecular forces are not equal. The distance between particles varies. They have undefined geometric shapes. They do not have sharp melting point. Example, glass. Amorphous solid जो होते हैं वो शेपलेस होते हैं, irregular arrangement of solid particles होती है, intermolecular forces जो होते हैं वो equal नहीं होती, distance भी वेरीज करता है, अनडिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप होती है और इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. amorphous solid एग्जांपल है ग्लास. नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड. In crystalline solids, the particles are arranged in a three-dimensional order. The particles have equal intermolecular forces. The distance between particles is constant. They have sharp melting point. They have defined geometric shape. Example, diamond. Crystalline solids के क्या होते हैं? एक well defined arrangement होती है. Intermolecular forces जो है वो equal होती हैं. Distance between the particle equal होता है. इनका sharp melting point होता है. एक well defined geometric shape होती है. और crystalline solid example है diamond. Now question number 8. Explain the allotropic forms of any two solids. The term allotrope refers to one or more forms of a chemical element that occur in the same physical state. The different forms arise from the different ways atoms may be bonded together. Allotropes may display very different chemical and physical properties. Allotrope की टर्म क्या है पहले हम ये समझते हैं. It refers to one or more forms of chemical element that occur in the same physical state. ये एक या एक से ज़्यादा फॉर्म है केमिकल एलिमेंट की जो कि एक सेम फिजिकल स्टेट के ऊपर अकर होती है. Example, graphite and diamond are both allotropes of carbon that occur in the solid state. Graphite is soft while diamond is extremely hard. ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं. ये कब फॉर्म होते हैं? इन सॉलिड स्टेट. इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है, डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल. O2 and O3, that is ozone, are allotropes of oxygen. These allotropes persist in different phases, including the gas, liquid and solid states. O2 और ओजोन जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन हैं. इनके जो है ये जो एलोट्रॉप्स हैं ये डिफरेंट फेजेस के persist करते हैं, इंक्लूडिंग द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स. ये सॉलिड में भी है, गैस में भी और लिक्विड में. Question number 9. Plot of vapor pressure versus temperature of four liquids are given in the following figure. ये आपको बुक के अंदर फिगर दी हुई है. हमने क्या करना है? Find the boiling point of each of the liquid when the atmospheric pressure is 1 atmosphere.
The boiling point of each of the liquid when the atmospheric pressure is 1 atm is given as chloroform 61 degrees centigrade, ethanol 78 degrees centigrade, water 100 degrees centigrade, and ethanoic acid 119 degrees centigrade. Part B है at what temperature ethanol will boil when the atmospheric pressure is 51 kilopascal. 101.325 kilopascal is it's जब होगा हमारे पास प्रेशर तो इथेनॉल बॉयल होगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 किलो पास्कल पे जब हमने उसको बॉयल करना है तो हम जब टेम्परेचर फाइंड करेंगे वो क्या है 78 डिवाइडेड बाय 101.325 101.325 51 किलो पास्कल हमें प्रेशर गिवन है हमने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है तो 78 divided by 101.325 multiplied by 51 that is 31.274 degrees centigrade. Part C. How can you make water to boil at 80 degrees centigrade? The boiling point of water is 100 degrees centigrade when the pressure is 760 millimeter of Hg or 1 atmosphere. But for 80 degrees centigrade the pressure will be calculated as 100 degrees centigrade 760 millimeter of Hg 1 degree centigrade के लिए होगा 760 divided by 100 80 degree centigrade के लिए 760 divided by 100 multiply by 80 and we will get 608 degree centigrade मतलब हमें इतना टेम्परेचर चाहिए कि वो जो है वो वाटर जो है वो बॉयल हो सके Now part C. How can you make water to boil at 80 degrees centigrade? The boiling point of water is 100 degrees centigrade when the pressure is 760 millimeter of Hg or 1 atmosphere. But for 80 degrees centigrade, the pressure will be calculated as 100 degrees centigrade boiling point है जब हमारे पास प्रेशर जो है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने लेना है टेम्परेचर तो उसके लिए हमें जो प्रेशर चाहिए वो होगा 760 डिवाइडेड बाय 100 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर गिवन है हमने प्रेशर फाइंड करना है तो 760 डिवाइडेड बाय 100 divided by 100 multiplied by 80 is equal to 608 millimeter of Hg मतलब हमें 608 millimeter of Hg प्रेशर चाहिए ताकि हम वाटर को जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बॉयल कर सकें Now let's move forward. Part D. At what temperature chloroform will boil when the external pressure is 50 kilopascal? अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है हमें एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ 50 kilopascal. At 101.325 kilopascal 61 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का 1 kilopascal 61 divided by 101.325 हमें 50 kilopascal दिए तो 50 kilopascal के लिए हम करेंगे 61 divided by 101.325 into 50 we will get 30.11 degrees centigrade. Part E. Can you boil chloroform at 0 degrees centigrade? Yes. When the temperature in degrees centigrade can be changed into Kelvin scale. Example, chloroform boil at 61 degrees centigrade and in Kelvin when we add 273 in degrees centigrade we will get 334 Kelvin और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमें टेम्परेचर केल्विन में जो होगा वो 273 केल्विन F है predict the boiling point of chloroform at 600 millimeter of Hg. At 760 millimeter of Hg, 61 degree centigrade है boiling point for chloroform
1 मिलीमीटर ऑफ Hg के लिए होगा 61 डिवाइडेड बाई 760 और अब हमने 600 के ऊपर फाइंड करना है तो 61 डिवाइडेड बाई 760 मल्टीप्लाई बाई 600 we will get 48.16 degrees centigrade. Now question number 10. Why does evaporation lower the temperature of a liquid? Only those molecules which have greater kinetic energy than average can break away from the surface of liquid. When high energy molecules leave the liquid and low energy molecules are left behind, the temperature of liquid will decrease. To compensate, this system will absorb more energy from surrounding. That is why evaporation is a cooling process and evaporation lowers the temperature of a liquid. जैसा कि हमने पहले ये बात डिस्कस की कि जो evaporation का जो प्रोसेस उसमें क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस से लीव कर जाते हैं, पीछे क्या रह जाते हैं, जिनकी एनर्जी लो होती है वो वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और वो फिर सराउंडिंग से हीट लेता है और जिसकी वजह से सराउंडिंग का भी टेम्परेचर लो हो जाता है और हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है कूलिंग प्रोसेस है और इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को लोअर कर देता है. Now question number 11. The air in perfectly elastic balloon occupies 855 centimeter cube during the fall when the temperature is 20 degrees centigrade. During the winter, the temperature on a particular day is minus 10 degrees centigrade. The balloon occupies 794.39 centimeter cube. If the pressure remains constant, show that the given data proves the volume temperature relation according to Charles' law. अच्छा जी, हमें अब V1 दिया हुआ है 885 डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीमीटर क्यूब. टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इन केल्विन इट इज 293 केल्विन. V1 हमें दिया हुआ है 885 सेंटीमीटर क्यूब और T1 हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जब हम केल्विन में से करेंगे तो 293 केल्विन होगा. V2 हमें दिया हुआ है 794.39 सेंटीमीटर क्यूब और T2 हमें दिया हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में होगा वो 263 केल्विन. According to Charles' law, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. So 885 divided by 293 is equal to 794.39 divided by 263. We will get 3.02 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन और दोनों के जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं, कांस्टेंट है. तो हम कहेंगे कि thus the given data proves the volume temperature relationship according to Charles' law. Question number 12. In the past, gas volume was used as a way to measure temperature using devices called gas thermometer. An experiment obtains the following data from gas thermometer: volume dm³ 2.7, 3.7, 5.7 और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है 0, 100 और 300. Show that gas thermometer obtained result according to Charles' law. Similar approach हमें इधर लगानी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में की है. V1 हमें दिया हुआ है 2.7, T1 है 273 केल्विन, V2 है 3.7 dm³, T2 इन केल्विन हो जाएगा 373 केल्विन, V3 है 5.7 dm³ और T3 है 573 केल्विन. According to Charles' law, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by V2 is equal to V3 divided by T3. और जब हम सबकी रेशियोज लेंगे तो ये भी इक्वल आएंगे.
that is 0.009 dm cube per Kelvin, और हम कहेंगे कि thus the given data satisfies the volume temperature relationship according to Charles' law. Now let's move forward. Question number 13. In an automobile engine, the gaseous fuel-air mixture enters the cylinder and is compressed by a moving piston before it is ignited. If the initial volume is 990 cm3, after the piston moves up, the volume is 90 cm3. The fuel-air mixture initially has a pressure of 1 atm and final pressure is 11 atm. Do you think this change occurs according to Boyle's law? V1 हमें दिया हुआ है 990 cm3 और V2 हमें दिया हुआ है 90 cm3. इसी तरह हमें P1 दिया हुआ है 1 atm और P2 हमें दिया हुआ है 11 atm. According to Boyle's law, V1 P1 is equal to V2 P2. 990 multiplied by 190 multiplied by 11. We will get 990 atm cm cube और उसके लिए सेकंड केस में भी हमारे पास 990 atm cm cube आएगा. तो हम कह देंगे कि thus the given data proves the statement of Boyle's law and this change occur according to Boyle's law. Now question number 14. A sample of neon that is used in a neon sign has a volume of 1500 cm3 at a pressure of 636 torr. The volume of a gas fit is pumped into the glass tube of the sign is 1213.74 cm3 when Q the pressure of 786 torr. Show that this data obeys Boyle's law. Similar approach as we do in question number 13. V1 हमें दिया हुआ है 1500 cm3, V2 हमें दिया हुआ है 1213.74, P1 हमें दिया हुआ है 636 torr और P2 हमें दिया हुआ है 786 torr. और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का वो आना चाहिए इक्वल. सो V1 P1 is equal to V2 P2. 1500 multiplied by 636 is equal to 1213.74 multiplied by 786. We will get 954,000 torr cm3. Thus given data proves the statement of Boyle's law and this change occur accordingly. Now the last question is question number 15. Instrumentation changes as science progress. Comments on it. Yes, this is a true statement that instrumentation changes as science progress. Some examples for the proof of this statement are exact heat changes during chemical reaction can measure with the help of digital thermometer. pH of solution and blood can be measured exactly by pH meter. Doctor uses stethoscope to listen heartbeats. Barometer is used for measuring air pressure. Mass spectrometer is used to find out atomic masses of an atom.